this evening for this time of testimony. Brother Daniel Pradeep of Dimapur will share his testimony for the glory of God. Nagabantagani gajing mani gajing hene gajan med nai gajing pungin sngai gajing plashe masim jong brother Daniel Pradeep na po Dimapur namta kaburam gajong lay. इस शाम के समय में ब्रदर डैनियल दीमापुर से हैं, वो अपने प्रभु के नाम की महिमा के लिए अपनी गवाही को बांटेंगे. Praise be to the holy name of the Lord. Longa buram me kerteng gabakhoy gajong try. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो. First of all, I am not worthy to stand before in the presence of the Lord and give testimony in the midst of saints and all the children of God. Nangkong ngam sang long babit nam yagaban yang hangni yagaban ai gijing plan agaban ta kerteng gajong try hapdeng kiru khoi gajong blay bat ki khon gajong blay baro. मैं परमेश्वर के संतों के बीच में और सारे प्रभु के लोगों के बीच में गवाही देने के लिए योग्य नहीं हूँ. Even though in this evening, Lord gave me this privilege to glorify His name in His presence, for that I really thank God. Blel ay nga gani galat ya gabangan yang gani gajan met ban pendon buram me kerteng gajong unam ta gani ngai ngo yu blay. सबसे पहले शाम के समय मुझे उसके सम्मुख में उसकी महिमा के लिए गवाही देने के लिए दिए हुए अवसर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. First of all, I born and brought up in Roman Catholic family. Banengkong lakha lapan he pensan nga ha kabalang Roman Catholic. मेरा जन्म और पालन पोषण रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ. In my family, me and my elder brother, we are two sons for our parents. Bat haga yeng gajungi mga bat himmen na shinrang jungang idon tang arngut sipara. मेरे परिवार में मेरे माता पिता के मैं और मेरा बड़ा भाई था. And we are in a middle class family. My father working as a laborer. Bat ngilong kita ki long yeng ki ba pedeng bat kumjuro ipa jonga ilong inong tribala. हम मध्य वर्ग के परिवार के लोग थे और मेरे पिताजी भी एक मजदूरी का काम करते हैं. He used to go to work in another part of his life. He used to drink and always he's making trouble to my family. Bat itrei sitom hagawai galiang bat nagawai galiang pat ihap ya kaban pendap gijing dan kam hagayeng ke sembaro. और दूसरी तरफ से देखने से मेरे पिताजी शराब पीते थे और परिवार को हमेशा तंग करते थे. As days are going, we are seeing this situations about my family and my father. We are growing up. Namar ba ipa jonga ilong ba judi buat kat banang mi gisngi kane gajing long hai kanang man bon. जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे ही मैं और मेरा भाई जो था हम बढ़ते गए. So from class standard 1st to 6th standard, I studied in matriculation school. Bat ha nado kelas ka ba hado ke kelas ka ba riu ngapule hapo kawe ke school. पहली कक्षा से लेकर छठी कक्षा तक मैंने मैट्रिकुलेशन स्कूल में पढ़ाई की. Because of poverty of my family, they make me to study in government school. After that, slowly I got worldly friends, so my life changed. I affordably addicted to my friends and all the sins of this world. Mar gajing duna gajing yo haga yeng gasem gajunga la penpule nga haga school sarkar kumtaro nga la yikendo spat ki paralok gajunga bat gajing im gajunga kalangam haga ni ka percaya. हमारे परिवार की ऐसी अवस्था के कारण उन्हें सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मेरे जीवन में मैं दूसरे संसारिक मित्रों के साथ मिल गया और उनकी संगति के कारण मेरा जीवन पाप में बढ़ता गया. After some days going, my father and my mother separated. We are going and staying with my mother. Pada din kata kalau don kata gajing ya shong klat ime badi pa jonga bat ngi lalai ban sa bat ime. और उसके बाद मेरे माता पिता लोग हो गए और मैं हमारी माता के साथ रहता था. Suddenly my father passed away. After that, I can't able to continue my study, so I just quit my studies. I went to work and I also work as a laborer in my small age. Bat hagapor agar ta kabangadang red iparo imdon shu kumta ngalahap ya kaban sange no ya kaban late school hadin kata ngalalait trei kikam belaman kesngi. मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मैं और आगे पढ़ाई नहीं कर सका और मैं भी मजदूरी का छोटी उम्र में मजदूरी का काम करता था. The death of my father affected my life very much, so that I can't able to go forward in my life. I struggled in my life because I'm seeking the love of a worldly father. Bat kata gajing klat no ipa jonga kala kata hado kata ya gajing im jonga mangam syam la shu ya kaban ya chaprang namar ngas ngodon kam ya gajing e jong ukpa kani kado. So I was too much affected, so that wherever I grow office, wherever
going road, I start thinking about my father and I am crying. Bat chanu shnu bangalet ban tre ki kam ki jonga ngakan mau ban ngapos new chpang ipa ban ngayam. जहाँ कभी मेरे काम में मैं पिताजी के बारे में सोचता था और रोता था. One day I crying in the road, suddenly one voice I heard, "Your father, I am living, why you are crying?" Bat hadian katang ayok snui ka wai ka sur ka ong ngau ka pa jong me kadang imbale miyam. एक बार मैं सड़क पर जाते हुए ऐसे रो रहा था और एक आवाज मैंने सुनाई दी कि मैं तेरा पिता हूँ तो क्यों रो रहा है. I heard the voice, but no one can able to comfort me because I am hearing the voice. I can't see anyone. Bat ngayok snui ka ni ka sur dan manu malak ban pentingan nga. Bar ngayok snui tang ya ka sur ren ngam yo i ano. और मैं फिर भी रोता रहा क्योंकि मैंने आवाज तो सुनी लेकिन कोई मुझे दिखाई नहीं दिया. After days going, I got salvation. By the grace of God, I received Jesus Christ in my life. On one particular day, I saw one vision. Bat hadian ka tugat ni sngi nang lech nang yat bat nga layok piang yo Jisu kung nang panim bashimet jonga bat hagatang yo i ka jing ito pao. और जैसे दिन बीतते गए वैसे मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता होकर मैंने स्वीकार किया और उन दिनों में मैंने एक दर्शन देखा. I saw one old man standing on that vision, longing for his son, waiting for a long time. Bat ngai i yo wei ubriu bala temen bat u ap nam ta wei u khun jong u bala ja na ki babon bon gisngi. उस दर्शन में मैंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ खड़ा है और अपने बेटे के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है. I am seeing in that vision, after one boy going and hug that father, I am seeing myself on that vision, hugging that beloved father. After that vision, my life changed. I was comforted by Jesus in all my life as a father in my life till today. Hadian bangalay i ngi so pao ngi ba wei khun na barit ulai ban kudup yo tau pa ban ngi i se la dero bangalay ya ka bangan kudup yo tau pa da ka ga jing i ban hadian gane ka don ga jing kala ga ba kraw ha ga jing im ga junga. और मैंने देखा कि एक लड़का अपने उस पिता के साथ वो गले से लगा रहा है और मैंने उसमें देखा कि मैं भी उसमें पिता के साथ मैं गले लगा रहा हूँ और इस तरह से प्रभु ने मुझे पिता होकर मुझे तसल्ली दिया और आज के दिन तक वो मुझे तसल्ली दे रहा है. After I got baptism, I got water baptism. Lord bless me in my life, and slowly I improved, develop in my life, and I'm getting nice jobs, and I'm getting literal blessings in my life. Bat hadian kata ka bangang la yop diang ya ka jing pan baptis bau ble lo ka khu shibo ni ki ya nga bat ya ka jing im bat kum jo ula ai ro ya ka kam ka babyang ka banga dei ban trei ha ka jing im jonga. और उसके बाद मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और मुझे नौकरी मिली और मेरे जीवन में शारीरिक आशीषों को अनुभव करने लगा. In the year 2013, some of my TPM friends, they give me suggestion, go to Irumbliur, they youth meeting, they're going to conduct youth meeting, attend the youth meeting, you will be blessed. Bat house nem arajar khatlai ki don ki parolok jonga na gane ka balang Pentecost bat ki ong nga khilet sha ga jing seng samla po Irumbliur bat hang cha nga la let ban nga la yo gi jing kala. 2013 में मेरे मित्रों ने इस तरह से मुझे सलाह दी कि इरम्बलियोर में जवानों का सम्मेलन चलाया जाएगा और उसमें तो आशीष भाग लेगा तो आशीष पाएगा. After attending the youth meeting, on the first day itself, I got calling from the Lord to serve for this ministry. Hagasngi ga baneng kong hi habanga wan cha gane ga jing seng samla nga yo e ga jing khot ban chakri o try gane ga jing chakri. उस जवानों की सभा में के पहले दिन में ही मुझे प्रभु उसकी सेवा करने के लिए बुलाहट मिली. On those particular days, I am hesitating to come to ministry because worldly I was blessed so much, so I don't want to come to ministry. I'm not accepting the call of the Lord. Bat hagata ga sin ga baneng kong ngamla ya ga ba wan cha ga jing chakri namar nga tep asibon ke ge jing sngo pha par thai ga ba ngamla ban ngamla ro ban ko ngo ge jing khot jong ble. उन दिनों में मैं सेवा में आने के लिए बहुत हिचकिचा रहा था क्योंकि मैं शारीरिक रूप से इतना आशीष पाया था कि सेवा में आने के लिए मन नहीं था. On those particular days, I met with an accident. It was a big accident. Bat hakum kata ka por nga la yakendu ya kata ka accident ga bajur. उन दिनों में मैं एक बड़ी दुर्घटना से होकर गया था और ये बड़ी दुर्घटना थी. Almost 15 to 18 wounds are in my body. It's almost tatted. My skins are tatted. Kumba khat san khan ru tli kita gi jingmong ha ga met ga jonga bat ya ka sne do jonga ro la shutar. 15 से नहीं तो 18 ऐसे घाव मेरे शरीर में थी और मेरा मांस फट गया था. So there some of them they planned to take me to hospital, but suddenly I got one thought. One brother asked me one question: Do you taste the divine healing of the Lord?
But don gi bala ong ban ra yang aj po hospital but I don ni wei parashin rang pat ba ong hatu phi jumat ne em ya gajing pen khia ba kan jablai. मुझे अस्पताल में लेकर जाने के लिए वे लोग बातें कर रहे थे, लेकिन उसी समय में किसी ने मुझसे कहा कि क्या तुमने यीशु मसीह की दिव्य चंगाई का स्वाद चखा है? Before this accident, one brother, one servant of God, he told me, "Do you taste the divine healing?" I said, "No." "Okay, Lord lead you on that part. That time you learn from the Lord." Shua gata iwe ishakri jong ublei brother il ong nga hato pi jumat mo ya gajing pen khia na ublei nga ong em bat hadien gata ong kan sapoi ga por pi on da pin kendo ya gata pi don kam bat pi dei ban mat ro ya gajing pen khia na इस घटना के पहले एक सेवक ने मुझसे ऐसा पूछा था, क्या तूने दिव्य ईश्वरीय चंगाई का को चखा है? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब तू उस मार्ग से जाएगा तो उसे अनुभव करेगा। Seeing my worst situation, I got wounded, so everyone planned to take to me a hospital, but I said no. Some brother told me there is a divine healing. I want to taste that, so please don't take me to the hospital. Leave me alone, and Lord will heal me. Bada kata ka ba yu I kata gijing mong gijonga ki balajur don ki bakwa ban ra nga po hospital hanreng ong em ba I don ni brother bi kai nga mga dei ban mat e gijing pen khia ba kan jablai e nga marwei bat nga kwa ban mat e gijing pen khia ga jomblai. लोग मुझे अस्पताल लेकर जाने के लिए बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे ब्रदर ने मुझे सिखाया है कि ईश्वरीय चंगाई के बारे में, इसलिए मैं प्रभु ईश्वरीय चंगाई में खड़ा होना चाहता हूँ। I never take any medicine. I never take anything. By the grace of God, servants help me, and they pray and put the oil. Till this day, all this wounded are healed by the Lord, who's our healer. He is really our Lord, the healer. Help me to taste the blessing of divine healing. Bada gajing isnai jomblai ngam shem la shem kanu kanu dawai hanrei ki shakri ki jomblai ki la sumarenga ki la ta da ko umpnyang bat hadu menta kam don kanu kanu kata gajing mong hagamet ka jonga bat ki la khia lut na dong shadong bat ngala mat shisha ta gajing pen khia ba kan jablai. मैंने कोई दवाई नहीं खाई, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करके वो तेल लगाया और मैंने प्रभु को उस दिनों में चंगा करने वाला होकर अनुभव किया और मेरे सारे घाव प्रभु ने चंगे किए। After this, when I served in one particular place, I got some breathing trouble suddenly for 7 days. I can't able to breathe. I can take breath. I can't leave the breath outside. So I was very much struggle with that breathing problem. Mat hadir mga wan sa gajing shakri nga shakri ha kawai gajaka mga ladon kata gajing shitom ya kaban ring penhiar mensiem ko mahnyaw sngi man ngamla ya kaban penhiar mensiem hanrei penban एक जगह में सेवा करने के समय में मुझे सांस की बहुत बड़ी समस्या हुई। 7 दिन तक मैंने बहुत कष्ट उठाया, ना तो सांस ले पा रहा था ना तो छोड़ पा रहा था। One particular day I can't able to bear that, so I prayed, Lord sanctify me and take me, or else heal me. But hagata gajing bomla sha shu junga nga du la duai ho bleng ong try pen gatang kho yanga but shim no yanga lem kum ta to pen khia no yanga। एक दिन मुझे बहुत कष्ट हुआ और मैंने प्रभु से ऐसा प्रार्थना किया कि प्रभु तू मुझे शुद्ध करके ले नहीं तो मुझे चंगा कर। On that particular evening, Lord give me on that midnight, almost it's around 2 o'clock at midnight, Lord give me some rest. At the early in the morning, Holy Spirit Lord speaks to me saying, hereafter in your life you never feel that sickness in your life. Glory to the name of the Lord. Hagata ka miet hiu blel ai nga gajing cha thait ko ma arbaje ha ga shiteng senya badu mun sia ma ko jong bel wan ban kren nga ong mahadian nan ni phenom don sho kono कनु गजिंग पंग नम तागने आय का बुरम शोभलाई। आधी रात को लगभग 2 बजे परमेश्वर ने मुझे आराम दिया और उस समय में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझसे बातें किया कि अभी से तो अपने जीवन में कभी भी बीमारी से दुख नहीं उठाएगा। परमेश्वर की महिमा हो। By the grace of God, till now I don't feel that sickness in my life again. नगजिंग आई एक जोंग ब्ले हदो मंतांग हम यो स्नु शो इता गजिंग पंग बकवान। परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से अभी तक वो बीमारी को मेरे जीवन में नहीं आई। In this evening, many of your youths and many people hearing this testimony, हगने के जन मेट शिबो नफी की समला बट की वही पट की स्नु गजिंग फला जोंगा। इस शाम के समय में बहुत सारे जवान और दूसरे इस गवाही को जो सुन रहे हैं। I'm giving all the youths, especially youths, if you have calling to serve the Lord, please accept and take this privilege by the saints of God to follow the Jesus through the fellowship of saints. You don't ignore it. Lord will bless you and Lord will make your name great.
Malada pidon ganu unu gajing khot na pdeng jong pi ki khana samla smabha ya gaban wan bani selok bat kiru khoi ki jong blai bat bot hagalan ti ga ki ki yat bat pin la ro ya gaban yo pdeng shibon ki जिंकर खुदा का शक्रियो blai मैं शाम के जमानों से निवेदन करता हूँ कि यदि प्रभु आपको सेवा के लिए बुलाता है तो इस बड़े सौभाग्य को, संतों की संगति को, इस बड़ी बुलाहट को आप रद्द ना करें लेकिन उससे ग्रहण करें. Lord, really help me to taste himself as a father and healer in my life. I really thank and praise God. You people, all saints and all the believers, I requested you to pray for my ministry and my life. Praise be to the name of the Lord. Dasishang alamat ya ublay ko mukpa bar unong penkhia jonga bar kum tanga karpat ya pi ki shakri jong blay ki ruko jong blay ki prabanget banduai na gabanta jonga ba gajing shakri ki jonga anta gani ngaya roy try. प्रभु को मेरे जीवन में प्रभु ने उसे पिता होकर और उसे चंगा करने वाला होकर मेरे जीवन में अनुभव करने के लिए मदद किया. मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि प्रभु मेरी सेवा के लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी सेवा को आशीष करे. प्रभु के नाम की महिमा हो. For the ways in which the Lord led this brother when he longed for the love of a father after losing his father, Jesus came in search of him to reveal that his love is the true love of a father, and he was able to accept Jesus as his Lord and Savior. Hadin ba ini parai la do no ya lau jong pa Henry try Jesu la penlong ye u kum la ujong ukpa bat bula penla ro ya ka ban yalam I ya ka ba ila ban pdiang yo Jesu kum bunong pen imbashimen. प्रभु ने इस भाई के जीवन में बड़े काम किए. इन्होंने अपने पिता को खो दिया और पिता के प्रेम के लिए वो लालसा कर रहे थे, लेकिन पिता परमेश्वर सच्चा पिता होकर, प्रेमी होकर, उसका पिता होकर प्रभु ने उससे प्रेम किया. Then God helped him to obey the truth of baptism. In obeying the word of God, thereafter, God began to bless him spiritually, and God also gave him many good jobs and earthly blessings too. And later God called him to serve him. He was not willing to leave all those things, but then God revealed his power, healed him when he was very seriously wounded, and thereafter he was able to surrender his life to God entirely, for helping him to put his entire trust in Jesus, and for keeping him till this day. God may keep him faithful to the end, and God may also help young people who are called, young people in our midst who have heard this testimony, who are called to serve God. May the Lord raise up many from our midst also to answer the call of God and to answer the loving call of their Father and come out to serve God. Shall we praise God? But Boblay ru lapan lai even yop dia inga bor jong umun se makut baban yok sngo ro ya kita gijing kerku gi jong blay baro da ka bau kerku ki kam ki jamba utray but ai shibon kita gijing kerku wat agane gamet but walai don kata ga jing khot nreim kwa ya ka ban e no ya kata ga kam gi jung I ka ba I don agane ka patay nrei da ga jing isnei ga jong blay lapan khia nam ta kita gijing pang ba kita gijing mong gi babon Boblay lapan la ro I ya ka ban ko ngo yu blay ban IT ya ka ban wan shakani ka kam ga jing shakri ba gi babon na pedeng jong piro pila ya ka ban don kum gane ga jo ga jing khot Boblay un pan la ya baro ya ka bangin IT ya ka ban shakri yo blay nam ta ni ki kam gi babha wo blay blay da ga ngin ya ro try. पानी का बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर ने उनको शारीरिक और आत्मिक सारे आशीषों से प्रभु ने उन्हें भरपूर किया और वो एक समय में प्रभु से दूर हो गए थे, लेकिन प्रभु ने अपने सामर्थ्य को प्रकट करके और चंगा करने वाला परमेश्वर होकर अपने आप को उन पर प्रकट करके उनके विश्वास को बढ़ा के प्रभु के पास आने के लिए और उसकी बुलाहट को पाने के लिए प्रभु ने मदद किया. कितने जवान यहाँ पर भी हैं जो प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं, वे भी प्रभु की बुलाहट को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए और परमेश्वर खास करके इस भाई को भी अंत तक प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहने के लिए मदद करना चाहिए. इसलिए हम उसकी स्तुति करें. Hallelujah, Lord, we thank you for all your goodness, for all the great things you have done, for the love of the Father as a Father. We thank you for all that you have done, O God. We praise you.